सक्षम वैली हम लोग मानते हैं कि ये हमारा क्षेत्र है. We have never accepted the so-called China-Pakistan boundary agreement of 1963, through which Pakistan unlawfully attempted to cede the area to China, and have consistently conveyed our rejection of the same. We have registered a protest with the Chinese side against illegal attempts to alter facts on the ground. We further reserve the right to take necessary measures to safeguard our interests. सक्षमवादी की जहाँ तक बात है, ये हमारा अपना, हम इसको अपना टेरिटरी मानते हैं, अपना क्षेत्र मानते हैं. हमने कभी ये स्वीकार नहीं किया है जो सो कॉल्ड तथाकथित पाकिस्तान चीन बाउंड्री जो एग्रीमेंट है 1963 का, उसको हम लोगों ने कभी नहीं माना है, जिसके ज़रिए जिसके ज़रिए पाकिस्तान ने ये जो ज़मीन है, वहाँ की जो क्षेत्र है, उसको चीन के अधीन किया था. और हमने हमेशा इसका खंडन किया है. हमने अपना विरोध भी जारी किया है चीनी सरकार के साथ, चीनी साइड के साथ, कि आप जो ज़मीनी हकीकत है उसको बदलने की कोशिश ना करें. और हम हमेशा वी हैव द राइट टू रिजर्व, वी फर्दर रिजर्व द राइट टू टेक नेसेसरी मेजर्स. जो हमारा अपना मूल जो हमारी इंटरेस्ट हैं, उसको हम सेफगार्ड करने के लिए हर कोशिश करेंगे. Siddhant, regarding question on USCIRF, the US, that is United States Commission on International Religious Freedom, they had released their report 2024 yesterday. They have been releasing their reports earlier as well, in earlier years. The USCIRF is known as a biased organization with a political agenda. They continue to publish their propaganda on India masquerading as part of an annual report. We really have pluralistic and democratic ethos. Their efforts to interfere in the largest electoral exercise of the world will never succeed. मैं इसको हिंदी में भी आप लोग के लिए रूपांतरित कर देता हूँ. अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग यानी कि USCIRF को राजनीतिक एजेंडे वाले पक्षपाती संगठन के रूप में जाना जाता है. उन्होंने वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में भारत के बारे में अपना दुष्प्रचार प्रकाशित करना जारी रखा है. हमें वास्तव में ऐसी उम्मीद ज़रा भी नहीं है कि USCIRF भारत की विविधतापूर्ण, बहुलतावादी और लोकतांत्रिक मूल भावना को समझने की कोशिश भी करेगा. उनके द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए किए गए प्रयास कभी सफल नहीं होंगे. शंकर जी, मैंने खासकर आपके लिए, क्योंकि आप कहते हैं कि हिंदी में भी ज़रा बताएं, इसलिए मैंने आपके लिए इसको करके ले आया था. Issue regarding your question on the media reports in Australia. Look, we really don't have no comments to make on those reports. We see them as speculative reports, and we have no comments to make on them. So that is how we look at it. It's not our policy to do so on such matters, especially. On Columbia University protest, Siddhant, we had already, in my last presser that time, we had made our views known to you. So I would refer you, if you could look at them. There were some questions regarding Indian students, etc. On that, so far no Indian students or their families have contacted us for any assistance in regard to disciplinary action which has been taken for their participation in the protest. But at the same time, we also want to say that we expect all our citizens at home and abroad to respect local laws and regulations.
पीएम का बयान, वो जो जिस बयान की आप जिक्र कर रहे हैं उसको मैंने ठीक से देखा नहीं है, लेकिन ये इलेक्शन का मामला है, तो एक बार मैं देखता हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, फिर आपसे मैं वापस आपके वक्तव्य पे मैं आऊँगा। येशी। This is Yeshi Seli from the New Indian Express. What's the update on the 16 Indian sailors who are stuck in the ship MS Aries off the coast of Iran? And also there are reports saying that the job racket, where people had applied for jobs in Bangkok and ended up being in Myanmar working for fake cyber cells. There are some reports which suggest that some people have reached out to MEA for help. Is there any update on that? Okay. Elena. Good evening, Elena TASS News Agency. My first question is on context between India and my country in the framework of chairmanship of Russia in BRICS. So, what contacts are planned in the closest future? What can you tell us? And how maybe have these contacts activated in the framework of the chairmanship of Russia? And also last month there was information that 40 countries already applied for membership in BRICS. So do you have any information what are these countries, and what is India's approach towards the membership of this or that countries, which maybe you can name? तो अभी आप ये सीधी तस्वीर देख रहे थे जहां विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और साफ तौर पर यह कहा गया